all have both the traits, Shiva Shakti, right? Masculine traits, feminine traits. तो जब मेरा मैस्कुलिन ऊपर जाएगा मेरा फेमिनिन नीचे हो जाएगा, जब मेरा फेमिनिन ट्रेट ऊपर जाएगा मेरा मैस्कुलिन नीचे हो जाएगा. और अगर मैस्कुलिन ट्रेट वाली विमेन होगी ना तो वो फेमिनिन ट्रेट वाला मैन ही अट्रैक्ट करेगी. बैलेंस. और अगर मैस्कुलिन ट्रेट वाला इंसान होगा तो फीमेल फेमिनिन वाला होगा. आप कभी भी चूज करके देखना. फादर और मदर अवेलेबल नहीं थे, बच्चे को निग्लेक्ट फील हुआ, बच्चे ने बोला आई एम नॉट गुड इनफ. वो थॉट बिलीफ रह गया. अब बच्चा बड़ा हुआ, उसको सामने से थोड़ी सी अटेंशन मिली, तो थोड़ी सी अटेंशन में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसने अपना हार्ट एंड सोल दे दिया. अब वो बहुत ज्यादा क्लिंजी हो गया, बहुत ज्यादा पीपल प्लीजिंग करने लग गया, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया, जो कि सामने वाले को पसंद नहीं आया और ब्रेकअप हो गया. मैं आपको बहुत जनरल पैटर्न बता रही हूँ. अब इंसान ने फिर क्या सोचा, आई एम नॉट गुड इनफ. तो वो थॉट और वो बिलीफ पूरी लाइफ जिंदगी में घूमता रहेगा रिलेशनशिप. और जब तक कि हम अपने इनर चाइल्ड को, रूट कॉज को हील नहीं करेंगे, तो वो थॉट, वो बिलीफ कंटिन्यूसली उसके रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट होगा. वेलकम टू माइंड मेल्डर्स. मैं हूं नेहा बावा. आजकल की लाइफ में सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है, लोग वहां पर दिखते तो बहुत स्माइलिंग फेसेस के साथ हैं, अपनी बहुत हैप्पी लाइफ दिखाते हैं, लेकिन उसके पीछे छुपा होता है बहुत ज्यादा डिप्रेशन, जिसके बारे में हम इतना ओपनली बात नहीं कर सकते हैं. कहीं ना कहीं एवरीबडी इज डीलिंग विद दीज डिप्रेशन केसेस, बट हम ओपनली बात नहीं करते हैं क्योंकि एक टैबू माना गया है. लोगों से भी इतना डिस्कशन नहीं करते हैं. आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इन डिप्रेशन केसेस के साथ डेली डील करते हैं. लेट्स वेलकम डॉक्टर आंचल मखीजा ऑन आवर शो. तो डॉक्टर आंचल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में. तो सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए. Hello everyone, I am Dr. Aanchal Makhija. I have a graduation degree of dentistry and then I shifted to psychology. So now I am a licensed clinical psychologist and a licensed clinical hypnotherapist and also an author of 3 books. वाओ. सो इतना ज्यादा शिफ्ट आपने, डेंटिस्ट्री भी करी हुई है, साइकोलॉजी भी करी हुई है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है, एंड आप राइटर भी हैं. तो इतना सब कुछ कैसे स्विच किया एंड देन फाइनली यू डिसाइडेड कि अब मुझे लोगों के इमोशंस के साथ स्टिक करना है? I think today youth is also going through this lot of confusion, and even I back then had have a career confusion. I very working and started studying for dentistry only. मेरे parents ने बहुत बोला that you should not only see dentistry, try to see other options, and I was very adamant that no, I have to do dentistry because there was a lot of scope outside India. But the moment when I came out of college, I saw dentists on every nook and corner, and I was disheartened, not because there are a lot of dentists, but because we were not paid. And at early age, हर youth मुझसे agree भी करेगा कि everyone wants to earn money as quick and as fast. So same as what with me. तो मुझे बहुत पैसे कमाने थे, बट आई सॉ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई स्कोप नहीं है. सो आई शिफ्टेड टू मल्टीनेशनल कंपनी एज अ क्लिनिकल मेडिकल एसोसिएट. तो पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरी मेडिकल नॉलेज यूज हुई हमारी. लॉट ऑफ यूएस क्लाइंट्स वर देयर. एंड जब आप एमएनसी में जाते हो ना, सो देयर इज अ भूत ऑफ MBA. So of course same happened with me. No clarity, no confusion, no goal, and I also pursued MBA entrepreneurship में. That was a great start, but then deep down you know that something is missing in your life. Same happened with me, and that was the moment mystically what happened. 2 things happened with me, and I keep telling to my students also that one was a spiritual path. I started chanting Buddhism, philosophy of Buddhism, and second was a career test that happened online, and that was also very mystic. One day a career test happened, and I was very desperately wanted to be happy to in my career. And I took that career test, and to my surprise, psychology and counseling was the first field that came to me, and मैंने आंखें बंद करके I just went for it, and that was the last point when I switched my career. My friends were also keep saying to me, क्या बहुत career choose करते हो? What are you doing in your life? What are you doing? So that was the point. I did not go back. And now it's been like 10 plus years that I am into psychology, doing a lot of courses, exploring more every day. So here I am. So I've heard about this career testing. I mean, it's very famous and common in other countries, Yeah. but it's a new concept in India. So can you tell about this
thing because youth, they are very, very diverted. Right. And Absolutely. after spending so many years here and there, and then they finally select the niche. Hmm. So can you tell me about this career testing, how to go for it, and how it benefits one? So right now it is very common in schools also. Every school in 10th, 11th, actually in 10th it should be done because they have to choose a field Right. for 11th and 12th. So it is done rightly it should be done at class of 10th, and that career test is nothing but a intelligence test that is based on backed up by theories, in which a student is answering the questions of general questions like what do you like in your life, or there are like 8 or 9 segments, उसमें verbal है, उसमें sports है. So there are different types of tests. एंड ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि बहुत सारे न्यू फील्ड्स भी आ गई हैं आजकल, Right. है ना, तो वो फील्ड उसमें इंक्लूडेड नहीं होंगी बिकॉज इट्स अ वेरी ओल्ड टेस्ट. But these are very precise tests. I have personally conducted tests on more than 1,000 students Wow. after pursuing their courses, during the courses, before, now in schools also. So, but it really helps. It gave the precise options, 3 top options that they should actually go for, choose in their lives, and according to their abilities, according to the skills, according to the inner inherent traits they have within, and it really suits them well. They do really well in their life. So I guess this is a very good idea. I mean, every student should take Yes, this they should. test. They should. Because at one point of time, they realize this is not for them. And recently, I conducted one podcast. So in that podcast, it was discussed like every person has a goal, Right. and you will not be happy till that goal is achieved. Yes. So you should Absolutely. pursue towards your goal. You should select a career which Right. will take you towards your goal. That's absolutely right. I will purposely not correct, replace that word goal with a purpose, with a Yes. mission. Everyone is born with a purpose. So उनका अगर career वो purpose oriented हो जाए तो it is like, they will feel so happy and joyful. Like every day I am hearing people for like 50 minutes, 55 minutes, but even after that I don't feel okay. People were complaining, people were saying, I never felt that because I feel this is my purpose. That is precisely why I have been here, on this earth. So I feel So it's joyful. like when your passion meets your profession, you get Absolutely. success and you Absolutely. get happiness. Absolutely. That's a byproduct. ओके, आपका डायलिसिस का भी बहुत फेस आया था, Yes. राइट? सो उस डायलिसिस में फिजिकल भी एक टॉर्चर होता है, Mm-hmm. मेंटल स्ट्रगल भी होती हैं. Mm-hmm. सो उस फेज ने आपको एज अ पर्सन कितना स्ट्रांग किया होगा, और अब जब आप क्लाइंट्स के साथ डील भी करती हैं तो कहीं ना कहीं वो रिलेट होता है वो फेस क्लाइंट की करंट सिचुएशन से. So physically torture hota hai, yes. Mentally, I feel I was again grateful for my philosophy. I was backed up by lots and lots of good fortune and emotional well-being. I was able to not only help my emotions, but also help other fellow dialysis members or people to, boost their emotions as well. So it really helped me. And as a person, I have evolved. And recently I was reading one of the books where it was written that if you are having illness in your life, that means you need to change something in your life. You need to expand your heart. So some people even go more harsher, and actually illness comes to expand your heart. And I feel that really helped me, and I'm so grateful for my illness. Nobody will say that, but I will say, because I became a immense compassionate person, more expansive in heart, to be able to relate to others' problems. Yeah. And physical health is always related to mental health, and mental health is related to physical health. So taking all that compassion from my illness to my patients, to all those I see people suffering from cancer, suffering from kidney diseases. So, I really definitely can relate to them and can give back the same strength I felt during that time to them. Give them that strength, that power, that compassion. So you have written one book, Pocket Diary for Good Mental Health. So in that you have broken down short formulas for Mhm. life. Mhm. So just brief me about that, how it helped others. क्योंकि आजकल के टाइम में ना everybody is looking for a shortcut. Yes, absolutely. ठीक है, किसी के पास ना इतना लॉन्ग टाइम नहीं है, लाइफ इज वेरी वेरी फास्ट. Right. तो वो आपने बहुत शॉर्टकट में वो बुक लिखी है. यू हैव गिवन लॉट ऑफ फॉर्मूलाज इन दैट. Yes. Just brief us about that book and the concept of those formulas. So one of the formulas I
give it to most of the clients is PAUSE. It is just one of the formulas. It has more than 20 formulas in my book. Like you said, shortcuts and short things to be able to apply. So what I, because everyone is becoming impatient, distraction, not able to react, not able to stop, and there is a lot of reaction and less Yeah. of response. So one formula that every client and they apply and they feel so great that okay, this worked for me is PAUSE, where P is you need to pause, you need to stop yourself and understand your trigger, understand your emotions, what are you feeling, है ना? तो जब हमें रिएक्ट करना होता है तो अंदर बहुत ज्यादा उबाल होता है, हम कांप रहे होते हैं, एंग्शियस हो रहे होते हैं. दैट इज ए, एक्नॉलेज योर फीलिंग्स. You will understand why it is coming, what is that person has said, and be very mindful. You can, reverse counting 50, 50, 49, 48. You can see the colors around, understand that. And S is soothe yourself, where you can just soothe your body, you can tap, whatever you want to, have a ice, have a cold water splash. And E is then go engage in that activity or discussion. और जब आप engage करने जाओगे ना, you will forget कि मैं क्या react करने वाला था. So this activity is something which I give to all my clients and they apply it. They become pro in next 15-20 days, but of course it's a difficult activity to apply. So yeah, certain formulas which are very applicable in life. There is formula RAIN, there is formula STOP. So yeah, very very viable and very easy to apply formulas to be. जो फॉर्मूलाज आपने करे हैं अपनी बुक में, ये आपके मतलब एक्सपर्टीज, आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, सो रियल लाइफ सिनेरियो से एनकरेज्ड है. रियल लाइफ सिनेरियो से एनकरेज बोल सकते हैं. जब पेशेंट आते हैं बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं, उनको क्या छोटी सी चीज़ बता दो और वो अप्लाई कर दे, उस चीज़ से इंस्पायर्ड हैं. और ऑफ कोर्स लॉट ऑफ बैक्ड अप बाय लॉट ऑफ रिसर्चेस, लॉट ऑफ एक्टिविटीज. इट इज मिक्स ऑफ ऑल दोस थिंग्स. तो ये जो हैबिट है, ठीक है, जैसे आपके पास कोई आता है, राइट, कोई पेशेंट आता है आपका, आपको प्रॉब्लम बताई, आपने कोई एक फॉर्मूला उनको बता दिया, तो ये अडॉप्ट करने में, इसे एक हैबिट बनाने में उनको कितना टाइम लगता है? Backed up by research, and it actually, I won't say depends from person to person, but research ये बोलती है कि किसी भी चीज को अगर फास्ट इंसान होगा ना, बहुत इजीली अप्लाई कर लेगा, तो 21 डेज में हैबिट बन सकती है. बट 21 days to 90 days वी नीड टू डू इट एवरी डे टू मेक इट अ हैबिट. एटॉमिक हैबिट्स में भी यही मेंशन किया गया है. सो बट देर आर पीपल हु आर सीइंग द रिजल्ट्स इन 15 days ऑल्सो, 20 days ऑल्सो. बट हाँ, हैबिट बनने के लिए मिनिमम 21 days यू हैव टू डू इट. तो वही है ना, शॉर्टकट वाला भी जमाना है. मैं आपको सीरीज का भी बताऊं ना, अगर मुझे कोई सीरीज भी देखनी होती है, तो उसकी स्टोरी जो होती है ना, डिस्क्रिप्शन, उससे पहले ये देखती हूँ कि इसके अंदर एपिसोड्स कितने हैं. एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल. हम सब अपने आप को पहले मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि अच्छा राइट. इतना टाइम देना पड़ेगा, इतनी चीजें हैं. तो यस. तो अगर छोटे से एपिसोड्स होते हैं ना, लेट्स से 4 या 6 हैं, तो हम देख लेते हैं. और अगर सीजन दिख गए तो इट्स लाइक चाहे वो कितनी भी अच्छी स्टोरी हो. राइट, एब्सोल्युटली. तो थेरेपीज कितनी बड़ी होती हैं? It depends from case to case. Minimum 16 to 20 sessions, and Okay. then it goes to up to more than that also. अगर एक very small therapy like cognitive behavior therapy, इसको हम 20 weeks देते हैं. Most of the clients they get very much pro in 15 weeks also. फिर वो खुद करने लगते हैं. But some of them they really need more time. So it again goes from case to case. तो ना, किसी चीज को आप एक मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स दे दो डेडिकेशन के साथ, तो वो फिर हैबिट बनी जाती है. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली. एंड गुड हैबिट. गुड हैबिट. सो आप एनजीओ के साथ भी काम करते हैं, राइट. राइट? उदायन. उदायन केयर. I just want to make sure that I'm pronouncing it correctly. Right. So ये हो गया मोहन फाउंडेशन. फाउंडेशन है. उसमें ऑर्गन डोनेशन के लिए मोटिवेट करना, क्रॉनिक इलनेस, मेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं. तो एनजीओ के साथ काम करना, उनको सेटअप करना और पर्सनल क्लिनिक में काम करना कितना डिफरेंट होता है? कितना डिफरेंट होता है. ओके, सो my life and my journey started with NGO. Udayan Okay. Care, actually not directly engaged with Udayan Care. I was working with Udayan Care and with affiliation with some psychologists. So it was in Faridabad only and all girls home. So my journey started from there, and I'm very much grateful for that experience because that gave me a great experience, opportunity to deal with one-on-one with children. Those have gone through a lot in their lives. And when we work with NGOs,
there is no barrier, there is no discrimination, there is, it feels like wow, this life is so much, you know, pure. Because today only I was going through the letters of those children. How Okay. mystic it is. And it was written, Happy birthday, Didi. Spelling of birthday is also wrong, but I was saying so pure hearted they are. And when I see clients, I will not say they are not pure hearted, but you know, somewhere they have, there are a lot of barriers. There are lot and lots of barriers कि मुझे judge कर रहे हैं, you know, मैं ये बताऊँ, मैं वो नहीं बताऊँ. But with in NGOs there is no barrier. So that was the best thing I have learned, and I have seen that heart of children. And with Mohan Foundation, there were a lot of dialysis patients. There was again a lot of pain. There were a lot of emotions involved. There was a lot of suffering in their lives. So वो भी again it was not backed up by any barriers, क्योंकि वो उनकी life और हमारी life एक ही हो जाती है उस moment पे. So my journey actually today, whatever I am, whatever I have learned is because of those two NGOs. And I feel everyone should go and engage with certain activities and meeting such people that really expands our heart. तो आपको बहुत empathetic बना देते हैं. बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. You actually start understanding them. Yes, understanding their lives, understanding their emotions, understanding. And you know, अभी recently I was seeing a video of a disabled child who was saying कि आजकल ऐसा बोला जाता है कि आप मेहनत कर लो, नहीं तो you know something will happen like this. So this is not empathy, this is sympathy. Not Right. also sympathy, this is, we are using it on a bad terms. But when we actually individually meet them, we feel so empowered, we feel so grateful. एम्पैथी तो बहुत ही छोटा वर्ड मुझे लगता है. हम, मैं तो बहुत इंस्पायर होती थी कि सी देयर लाइफ, दे हैव सीन सो मच, दे डोंट हैव पेरेंट्स, बट स्टिल दे हैव सो मच एनर्जी टू डू समथिंग इन लाइफ. वो दूसरों के लिए गिफ्ट बना रहे हैं, वो दूसरों Wow. के लिए कुकिंग कर रहे हैं. आई मीन दिस इज सच अ ग्रेट फीलिंग यू नेवर कैन गेट एनीवेयर इन योर लाइफ. या सो आई थिंक वी ऑल मस्ट go back and do something for society. It's a very good message that we are empowered, right? Yes, yes, So we are blessed. we are blessed So actually. we should do something for them. And you will not feel that, you know, कि आप उस side पे हो और वो side. They will make you feel more empowered, more grateful, and you know, fill you with a lot of joy and love. I still have so many memories. Thank you so much for bringing them back for me. And I really feel that we all should give back our time, our energy. If you have money, with anything we can, you know, give them back to them. So it will come back in hundreds. उसके लिए नहीं करना है, but to give with a pure heart. तो आजकल ना डिप्रेशन तो वैसे ही बहुत कॉमन सा था, बट लोग इसको ओपनली बात नहीं करते थे क्योंकि वो कहीं ना डिप्रेशन को एक मेंटल इलनेस के साथ जोड़ देते थे. Right. और सोसाइटी ऐसी थी कि उनको वो एक मेंटल वाला टैग ही दे देते थे. अब जो है सोसाइटी जो है इस चीज को लेकर ओपन हो गई है. तो आपको कितना शिफ्ट लगता है कि ये डिप्रेशन थिंग इज वेरी वेरी ओपन नाउ? The term depression is very open, used by children every other day. Mom, I'm depressed. Don't make me feel depressed. तो पहले मैं डिप्रेशन का जो टर्म कॉमनली यूज करते हैं ना, उसको थोड़ा मिथ ब्रेक करूंगी. Not every person can be depressed. If you are feeling sadness more than 4 weeks, if you're not feeling like eating anything more than 4 weeks, if you are not able to sleep or undersleeping or oversleeping more than 4 weeks, then only a doctor, a psychologist, or a psychiatrist tag you as a depressed or under depression. If you are sad, everyone can be sad. 2 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते के लिए, it is okay, है ना, to be sad is fine, but we cannot say, oh, I'm feeling depressed. No. बट स्टिग्मा अभी भी है, बिलीव मी. पेरेंट्स को अगर, बिकॉज आई डील विद स्टूडेंट्स एंड आई डील विद पेरेंट्स ऑल्सो, अगर हम बोलते हैं कि आपके, मैंने ये टेस्ट कंडक्ट किया है एंड आई फील आपके बच्चे को ये सिम्टम्स हैं, आई स्टिल डोंट टेक से कि आपके बच्चा डिप्रेस्ड है. नो, ऐसे कि हाँ सिम्टम्स लग रहे हो कि अरे मैडम क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, इतनी सी तो प्रॉब्लम है, ऐसा करेगा तो ठीक हो जाएगा ना. सो इट इज स्टिल अ स्टिग्मा. I will not say कि because we are using this word very commonly तो ये problem solve हो गई है. It is not. It is still there in the minds of people कि psychologist के पास नहीं जाना है, psychiatrist के पास नहीं जाना है. But I think अगर मेरे heart में problem है और मैं cardiologist के पास जा रही हूँ, तो अगर मेरे actually emotions को समझ नहीं रहा, तो why not? Why not go to a psychologist or a psychiatrist? So it is still a stigma. Of course, lot has changed because our actors have been vocal about it. Yeah. Deepika Padukone have been vocal about it, and lot many others. Things have improved. सोशल मीडिया पे भी लोग बहुत ज्यादा वोकल हैं, बट अगर हम डीप डाउन जाएं तो अभी भी स्टिग्मा, आई वुड से 70-30 रेशियो. Okay. It's still there.
Outside India, it's very normalized. It has been normalized right now. People are still, coming out. International people are taking sessions from Indian psychologists as well. So this is a very big thing. But in India, people are still, silently struggling. They are very scared of people around कि वो क्या बोलेंगे. What will society say? I'm going to psychologist. Am I going to a psychiatrist? What will they judge me? I mean, मैं इतनी कमजोर हूँ. I remember one of the students, he said, अरे मैम लड़के इतने कमजोर हैं आपके पास आके सेशन ले रहे हैं. I said it is not called kamzori. It is because they have no one safe person to speak out loud to. कोई safe space नहीं है उनके environment में. People are judging. Society छोड़ो, families are judging. तो वो Right. कहाँ जाएं? I mean, that is why a lot of suicides are happening. So I feel a safe space should be created among friends, among family members. वो बहुत important है. और ऐसे भी बच्चे हैं जो बच्चों को खींच के लेके आते हैं. मैम इससे बात करो ना, देखो 2 दिन से बात नहीं कर रहा है. तो ऐसे भी वेरी हेल्पफुल स्टूडेंट्स एंड दे अंडरस्टैंड कि कुछ तो दिक्कत है कि इंसान ओपन अप नहीं होता है. So even if safe space is not there with them, they know that safe space is with a psychologist or a person or a teacher or a family member. So this is a we together we can create that safe space. Does not matter you have to have a degree. No, you don't. अगर आपने वो सेफ स्पेस अपने बच्चे के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने मदर के साथ, ब्रदर के साथ अचीव कर ली ना, तो कोई भी प्रॉब्लम होगा वो सबसे पहले आपके पास आएगा. तो दिस इज सो पेरेंट्स का भी है, जैसे कि अब पेरेंट्स भी वर्किंग होते हैं एंड दे हम्म. ऑल्सो हैव टू मच ऑन देयर प्लेट. या ठीक है, बच्चों को उनका टाइम चाहिए और पेरेंट्स का होता है थोड़ा सा टाइम मिल गया तो एटलीस्ट मी टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर देम. ठीक है, अदरवाइज वो कितना करेंगे. तो वो भी बहुत गैप बढ़ा देता है क्योंकि किड्स विल नॉट अंडरस्टैंड देयर पेरेंट्स, द प्रेशर देयर पेरेंट्स आर जगलिंग विद, राइट. या सो ये भी क्या है, बच्चों को डिप्रेशन की तरफ ले जाता है. Yes, unfortunately, yes. I have been seeing a lot of children like this. They want mother's attention. They want to have a dialogue with father, but because they are unavailable, there are hidden traumas. Beliefs have been formed that I've been neglected, I am not good enough. और वो ना अपने आप को 2-3 different ways में digress करेंगे. Either wrong peer pressure or wrong, negative influences, or they will go too shy, or they will try to do any other kind of attentive creative activities जैसे कि अनकोपिंग मैकेनिज्म्स. कोई वेपिंग में चला गया, कोई टोबैको में चला गया, ड्रग्स में चला गया. some other few of them will go into on their own shells and वो अपने आप पे इतना गुस्सा हो जाएंगे, कुछ और को कर लेंगे, ऐसा कुछ काम करेंगे कि जिससे मम्मी और पापा को अच्छा लगे. है ना. तो one of my student, he started speaking about money things. वो कुछ नहीं Okay. पता था because he knows कि मेरे पापा को वो पसंद है. एंड नाउ इट हैज बिकम अ हैबिट कि वो मेरे पास भी आएगा ना, सबसे पहले पैसे की बात करेगा. तो नाउ वी हैव फाउंड आउट कि व्हाई इज ही डूइंग दिस, टू गेट आवर अटेंशन, टू गेट अफेक्शन. Okay. तो कहीं ना कहीं बच्चों के बिलीव्स वहीं से फ्रेम होते हैं क्योंकि उन्हें पेरेंट्स का टाइम नहीं मिला. सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर फैमिली मेंबर्स टू हैव 1 or 2 days ऑफ दैट फैमिली टुगेदरनेस. चाहे आप उसमें नॉर्मली मील खाओ, normally have enjoy the meal whatever you and discuss about a week, have gratitude activity, share good things about each other. That's it. I think once or 2 days a week भी हम कर रहे हैं ना, तो it is giving them lot of safety and security. उनको बाकी unhealthy mechanisms में नहीं जाना पड़ेगा. It every family member and every family should do this. तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चों को ना पेरेंट्स की कुछ ना कुछ वीकनेस पता होती है. जैसे आपने बोला कि फादर की अटेंशन के लिए मनी उसने स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे ही कई बार वो नेगेटिव भी बोलते हैं कि वो नेगेटिविटी से ही उनको अटेंशन मिले. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. और हमें लगता है ये तो कुछ गलत है. एक्चुअली वो क्यों कर रहे हैं हमने कभी ऐसा सोचा नहीं. वो सिर्फ हमारी अटेंशन के लिए कर रहे हैं. यस. तो ये चीजें ना हम साइकोलॉजिस्ट से ही समझ सकते हैं. मतलब डेली लाइफ में हम लोग ये फेस कर रहे होंगे, लेकिन क्यों कर रहे हैं वो आपने बताया. ये बहुत निग्लेक्ट एक बहुत कॉमन एस्पेक्ट मैं देख रही हूँ आजकल, जिसकी वजह से बच्चे बहुत इफेक्ट हुए. उनके बिलीव्स बहुत अपने को लेके बहुत खराब हो गए. आई एम नॉट गुड इनफ. अपने आप को कंपेयर करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि पेरेंट्स ने कंपेयर किया है ना. तो यही एक बिलीव बन जाता है कि आई एम नॉट गुड इनफ. और उस बिलीव से, बिलीव मी, आप लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाए. कॉन्फिडेंस इशू गया, सेल्फ वर्थ गया, एस्टीम इश्यूज आ गए. तो हाउ अ चाइल्ड विल डू गुड इन देयर लाइफ? राइट. कंफ्यूज ट्रैप में रहेंगे ना हमेशा. तो यहाँ कंपैरिजन तो पेरेंट्स का रहता ही है कि उनका बच्चा देखो ये कर रहा है, उनका देखो.
और वो ना पेरेंट्स का एक करियर वाइज भी प्रेशर बच्चों पर बहुत रहता है, हाँ। क्योंकि अब जैसे हमने स्टार्ट किया था कि करियर ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो गए हैं, प्रॉबेबली मिलेनियल्स हो गए, उनको वो सारे करियर ऑप्शंस इतने नहीं पता और एक एक्सेप्टेबिलिटी भी होती है। राइट और राइट जो राइट। मिलेनियल्स का माइंड होगा तो वो कुछ लिमिटेड करियर्स तक ही होगा, लेकिन जो जेन जी हो गई, जेन अल्फा हो गई, इनके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस है राइट, जो हमें समझ भी नहीं आएंगे। एब्सोल्युटली। अब वो भी एक क्लैश रहता है। तो अब देखो, ये पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट, ये इन्फ्लुएंसर्स का कॉन्सेप्ट जेनजीज एंड जेन अल्फा से ही आया है। वी ऑल आर एक्सेप्टिंग इट एंड वी ऑल आर फॉलोइंग देम, राइट? एंड दे हैव अर्नड इन मिलियंस एंड बिलियंस, व्हिच इज नॉट रॉन्ग। बट द पॉइंट इज, पेरेंट्स क्या चाहते हैं? कोई ऐसा काम करो जो उनको लगता है कि यही तो फील्ड्स हैं, डॉक्टर, लॉयर, कॉमन फील्ड जो हम देखते आए हैं, राइट। राइट? बट अब वो जो क्लैश आ रहा है ना, उस क्लैश में पेरेंट और बच्चे को सेम पेज पे आना पड़ेगा। I think counseling will help them. I think parent will also need to accommodate the current trends, the current scenarios. Exactly. कि बच्चे को क्या खुशी दे रहा है, और also a student and a child should also understand कि मैं influence में कर रहा हूँ या मुझे actually खुशी दे रहा है। मैं इसलिए कर रहा हूँ, like I did dentistry और I did MBA because सब कर रहे थे, because मुझे लगा कि यही अच्छा तरीका होगा, पैसे मिलेंगे। But what is giving you happiness? What is the purpose? What is one thing passion, like you said? तो हम दोनों को एक सेम पेज पे आना पड़ेगा। This parent also start accommodating, and child also need to find out what makes me happy, what is giving me a drive to do something for society, for a greater purpose of other people as well. तो जब वो दोनों मर्ज होंगे ना, तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पेरेंट भी खुश होगा और चाइल्ड भी खुश होगा। और कुछ फैमिलीज हैं आजकल जो एक्सेप्ट कर रही हैं that their children becoming influencers, becoming a YouTubers, maybe money is a driving Right. factor. So I think आने वाले टाइम पे sports, music is also going to expand their horizons, and many more fields which we are still not aware of: data science, artificial intelligence, Yes. virtual reality, and many more fields are, opening up because of the technology. And that's a reality. That's the reality. किसने सोचा था कि कोविड के बाद things will change 360 degree? Right. And we have opening now today. Everyone is using UPIs. Everyone is using a lot of the factors, but it has also affected the mental health. है ना? वो एस्पेक्ट हमें डिनाई नहीं करना चाहिए, दैट जितनी ओपनिंग्स हैं, अगर हम उसका मिसयूज कर रहे हैं या अगर हम उसको पर्पसली अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट अस इनटू 10x, which we might not today acknowledge it, but this is going to happen. तो क्या होगा? आइसोलेट हो जाएंगे, Right. अकेले अकेले काम कर रहे हैं, कभी बाहर जाके कलीग या ग्रुप यूनिटी या ग्रुप कम्युनिटी में काम नहीं किया, देर इज मोर ऑफ सैडनेस, हार्ट शेयर नहीं कर रहे हैं, तो अकेले में थिंग्स एंड द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर मल्टीप्लाइंग। तो बहुत रिसेंटली ये भी होता है कि जैसे बच्चे हैं, उनके कुछ जेंडर ट्रेट्स होते हैं, राइट? वो अब इनबॉर्न होते हैं या कैसे आते हैं, वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। बट पेरेंट्स नहीं देखते हैं, बिकॉज वो एक माइंड होता है कि लड़का है तो बिल्कुल लड़कों की तरह रहेगा, लड़की है तो बिल्कुल लड़कियों की तरह रहेगी। स्कूल के जो उनके पेयर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो ऑब्जर्व कर लेते हैं और वो उनको फिर बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ केसेस में बच्चे आइसोलेट हो जाते हैं, राइट, कई जगह पे सुसाइड भी कर लेते हैं। ऐसे केसेस आए हैं। तो राइट, रिसेंटली आई रिमेम्बर कि ऐसा केस आया था कि जहाँ बच्चे ने सुसाइड कर लिया Yes. था बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग। many cases on this. अब इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा डिबेट है। अवेयरनेस वो स्कूल में ही स्टार्ट हो जाना चाहिए, पेरेंट्स के साथ अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, है ना? तो अवेयरनेस के साथ हमें सेकंड स्टेप है एक्सेप्ट करना है। अब like in US there is again a very big issue about transgenders and homosexuals. The things have changed all things altogether abhi recently. Earlier things were better, so it has created a big havoc. Again I will say the scenario is, there is 60 or maybe I say 50-60 का रेशियो जहाँ पे एक्सेप्टेंस है सोसाइटी में, बट अवेयरनेस अभी भी नहीं है। तो वो जो एक्सेप्टेंस है ना, वो लोग अपनी फैमिली से टोटली आइसोलेट हो चुके हैं, क्योंकि वो उन्हें फ्रीडम ही नहीं फील होता था फैमिली के साथ, तो उन्होंने फैमिली छोड़ दिया है क्योंकि फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो यहाँ पर ना मैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से नहीं बोलूंगी, मैं पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से बोलूंगी। पेरेंट्स भी कैसे एक्सेप्ट कर ले इस चीज को? अगर मैं आपको अपनी लाइफ एग्जांपल दूं, आई वाज नॉट born with a kidney disease, right? और no one is born with any kind of a disease or an illness,
Parents accept. I'm not saying that's a disease, but I'm saying you have to accept your child. If a child is born with multiple retardation, mentally retarded, if a child is born with intelligence, आजकल autism हो रहा है, ADHD हो रहा है, आप कर रहे हो ना accept, छोड़ तो नहीं रहे हो बच्चे को, वो तो illness है, ये तो illness भी नहीं है. This is a trait. This is how a person is born. If a child is born and girl is attracted towards a girl, you have to accept there is no other chance. You cannot change the emotions, you cannot change the thoughts. वो सब पहले भी होता था, but it's just कि they were not vocal. उन्हें छुप चुप करा के बिठा दिया जाता था. सेक्सुअल असॉल्ट पहले भी होते थे, इट्स जस्ट दे वर नॉट वोकल, क्योंकि उन्हें मार के घर बिठा दिया जाता था. अभी पीपल आर स्टार्टेड बिकमिंग वोकल एंड उन्हें फ्रीडम चाहिए बिकॉज इट्स अ राइट. सो आई थिंक पेरेंट्स शुड एक्सेप्ट, पेरेंट्स शुड बी अवेयर कि क्यों भाई एडीएचडी वाले बच्चे को तो आप इतना पैम्पर कर रहे हो कि नहीं मेरा बच्चा है, बट आप यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द चाइल्ड हु इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, राइट? So I'm not saying वो भी गलत है और वो भी गलत है. I'm saying both the people and both children are yours and it's absolutely normal. So start normalizing it, start accepting it, and सबसे पहले be aware कि कैसे होता है, क्या होता है, उन लोगों को कैसा फील होता है, उन लोगों को क्या पसंद है. हमने हल्का सा माइंड पर्सपेक्टिव शिफ्ट किया ना, लॉट ऑफ थिंग्स यू विल ओनली फील जॉयफुल, यू विल ओनली बी इन अ पार्ट के मेरी फैमिली का पार्ट है. आई एम श्योर इट इज इजी सेड देन डन. Exactly. जिनके साथ हो रहा है वो भी पता नहीं कितना कुछ अपनी 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 इज्जत बचाने के लिए दे ओनली ट्राई टू प्रोटेक्ट कि नहीं मेरी मेरी फैमिली का नाम आए. आई विल स्टिल से कि प्लीज talk to the person, talk to the child, only then you will be able to break that barrier. Is it reversible? I mean, it's not a disease, but is it reversible? I don't think ये choice है ना, वो इंसान खुद ही कंफ्यूज है, वो इंसान को खुद ही नहीं पता कि वो ऐसा क्यों फील कर रहा है. अब ये देखो उसको खुद के इमोशंस नहीं पता कि मैं उसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं उसकी तरफ भी हो रहा हूँ, तो वो बच्चा खुद ही तो कंफ्यूज है. हम ये नहीं कहेंगे कि वो सोसाइटी के प्रेशर में ऐसा कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ. और मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताती हूँ. जब बच्चा पेट में है और मदर कंफ्यूज है कि मुझे लड़की चाहिए, मुझे लड़का चाहिए, मुझे लड़की चाहिए, एवरीथिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम देयर. क्यों आज ऑटिज्म के केसेस आता है, क्यों आज एडीएचडी के केसेस आता है? आई हैव एक्चुअली बीन आस्किंग मदर्स कि टेल मी व्हाट वाज योर थॉट व्हेन यू वर प्रेग्नेंट. शी हैज बीन वेरी आउट लाउड दैट या आई वाज रेस्टलेस, आई हैव बीन इन ट्रॉमा, आई हैव बीन अब्यूज, आई हैड अ वेरी बैड थॉट प्रोसेस, मेरा तो मन था मैं मर जाऊं. अब ऐसे में बच्चा हेल्दी कैसे होगा? आपको याद है पहले गीता पढ़ा जाता थे जब आप वूम्ब में बेबी होता था. आजकल क्या कर रहे हैं? सीरीज देख रहे हैं, साइको थ्रिलर्स देख रहे हैं. तो हाउ all these thought processes are coming in that child is when a mother is in dilemma. सन हो जाए डॉटर हो जाए, सन हो जाए डॉटर हो जाए, बाहर से प्रेशर आ रहा है डॉटर चाहिए, अंदर से प्रेशर आ रहा है सन चाहिए. जब इतने डिलेमा में रहोगे तो बच्चा भी डिलेमा में ही रहेगा. भगवान कहते हैं लो, That's it, तथास्तु. तथास्तु. So अब वो बच्चा खुद ही से फील कर रहा है कि मैं क्या करूं. वो उस बच्चे को कुछ नहीं पता, वो खुद एक डिलेमा में. So this is we need to understand very deeply that how it is coming and do some research ना. आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है, चैट जीपीटी में डाल के देख लो, कुछ भी कर लो, but try to be aware, find resources to be aware. Awareness is very, very important. Yes.